Friends, it's Timon, and we're back with our favorite Indian YouTuber, Desi Gym Fitness, bro. Haha. Man, I can't wait to do a reaction to his video. So, Desi Gym Fitness, the gym lifting, recruiting, fitness slave says, build your skinny arms bigger. All right. Day 1, day 16, day 34. What is this? 12 inches? 18 inches in 34 days. Okay. नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने हाथों को चौड़ा करना चाहते हो ना, सिर्फ एक He's obviously lying and exaggerating, but okay, whatever. चीज करने से नहीं होगा, दो चीज करने से होगा। आपको अपने बाइसेप को भी तगड़ा करना पड़ेगा और उसका भी बाप आपको अपने ट्राइसेप को भी तगड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने बाइसेप ट्राइसेप दोनों को अच्छे से ट्रेन कर दिया, दोनों पे अच्छे से काम कर। I like the muscle shirts. It accents it, makes it look like he's got muscles. Yeah. देना 100% ई गारंटी है। नेचुरली आप अच्छा खासा डोला, एकदम चौड़ा तगड़ा क्वालिटी का डोला, हाथ मोटा चौड़ा कर लोगे। और जिस बंदे का हाथ तगड़ा है, मोटा है, चौड़ा, जब How do you know it's just not water retention in there, just a bunch of water? How do you distinguish between myofibular and water? I mean, not to say that you won't get some myofibular doing some exercises. Definitely going to get some, but usually it dissipates very quickly. That the growth in myofibular growth. It goes away very quickly because that damage goes away. Now you become a comfortable lifting slave. This guy's really interesting, man. I don't know. Let's take a picture. He looks like portrait ready. He's got good camera. टी शर्ट पहनेगा, हल्का ही लगेगा और लगेगा हाँ ये बंदा मजबूत है, लगेगा ये बंदा बॉडी बनाया हुआ है। अगर आपका हाथ है पतला पतला Lagega. है तो आपको दिखेगा क्या? आपकी बॉडी दिखेगी नहीं, बवाल मच नहीं पाएगा। अगर आपको सच में बवाल मचाना है ना, तो आपको तगड़ा डोला बनाना चाहिए, लेकिन बहुत ही आसान। I love his enthusiasm, man. Yes, bro, on a bomba club, we gotta build those triceps and biceps. We gotta work harder than the last time, yeah, man. तरीका है बाबा, एक बहुत आसान तरीका है। Oh, you guys didn't know I speak Hindi, bro. Get it? I speak Hindi, man. Yeah, Hindu. So I can translate everything he says. ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। स्मार्ट ट्रेनिंग मैं बताने वाला हूँ आपको, एक ऐसी See, smart training, man. Watch, he's gonna show you the smart training. स्मार्ट ट्रेनिंग जो आप फॉलो करोगे ना, दुनिया किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में तगड़ा डोला बना के बवाल मचाई दोगे। बाइसेप भी तगड़ा रहेगा, ट्राइसेप भी तगड़ा रहेगा, फोरआर्म भी तगड़ा रहेगा। मतलब पूरा हाथ अलग प्रकार का भयानक टाइप का बन जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, तगड़ा डोला बनाने के लिए रेडी हो ना? लेट्स डू इट। Let's do it. तो वर्कआउट कोई भी करिए भैया, लेकिन वार्म जरूरी है। और बाइसेप का वार्म करने के लिए थोड़ा ऐसे करिए, ये वाला वार्म बहुत जरूरी है, इससे बाइसेप थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। और क्विक स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ थोड़ा जंपिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अपने बॉडी को बताओ कि भैया तुम एक्टिव होने वाले, तुम पे काम होने वाला। That's good warm up. See, this is the best kind of. These are the best kind of the channels that do the best on YouTube. You just do these simple like exercises. That's all people really want, because they can't really achieve the goals that they're looking for because they either don't have the time or they just don't have the effort to put into actually building real muscle. So, you can get them to do these pump training things in the park. They could build some, sarcoplasmic muscle and maybe a tiny bit of myofibular if they're lucky. But a good majority of it, like that fruitarian guy, you're going to build muscles on fruits. So, yeah, basically just water glycogen muscles. Yeah, you can pump your muscles up. That's really aesthetic. People want an aesthetic look, but remember, you have to maintain that with, constantly pumping your muscles and, I don't know, eating this glycogen and stuff. Yeah. जब थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाती है ना, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है ना, मसल में खून दौड़ने लगता है ना, तब ट्रेनिंग करने का कुछ मजा रहता है। बिना वार्म अप के आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इंजरी को, चोट लगने को बुलावा दे रहे हो। तो वार्म अप इनका अच्छे से हो गया। अब पहली एक्सरसाइज जो हम लोग लेंगे, ये है, देख रहे हैं, ये हम लोगों ने एकदम जुगाड़ से बनाया हुआ है। ये जिम में मिल जाएगा आपको। आप दीवार पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं जहाँ 3 कोना है या जहाँ पे ऐसे है सिस्टम, ठीक है। ये सीधे सीधे भी कर सकते हैं आप, 3 कोना वाले भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बार डिप्स। और इस पे ट्राइसेप एक भयानक एक्सरसाइज होती है जो पूरे ट्राइसेप को फाड़ डालती है, उसे बोलते हैं बार डिप ट्राइसेप ट्रेनिंग। जरूर रखो। अब देखिए, बॉडी अगर पीछे ले जाएंगे तो This is great. He made this apparatus out of like some wood. See, you can make your own apparatus like this out of wood. I have a small park over here, just over here, not too far. There's a little park. They have a section like that. It's with bars and like this thing, the dips and everything. They have it there made already in the park. It's got a bench. It's got everything there. It's got these things for calisthenics. It's great because it's very close by, but there's a slightly better one. If I go just down the road, there's another park with a more sophisticated setup for calisthenics. But the one that's over there, here in this little park, it's still very good, actually, believe it or not.
I think, you could practice, again, doing calisthenics, there's nothing wrong with that. As long as you do all the calisthenic stuff, right? If you're doing all of it, it's definitely going to strengthen you for sure. चेस्ट एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ट्राइसेप ट्रेन करना है तो चेस्ट को अप रखिए और बॉडी वहीं रखिए, नीचे जाइए। ये यहाँ पे गए, आप पूरा नीचे नहीं जाना है, ये 90 डिग्री जाना है। चलो ये देखिए ट्राइसेप आप चल, इससे पूरा ओवरऑल ट्राइसेप जितनी भी कमजोरी होगी सब भाई दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसे बॉडी पीछे रख के अगर आप ऐसे से मारे तो चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। जब आप चेस्ट ट्रेनिंग करिएगा तो पूरा नीचे जाइएगा, लेकिन इस पे See, you could actually just do this one exercise and then, get a relative amount of muscle damage, and then, being protein synthesis is outpacing protein breakdown, right? A positive nitrogen balance, eating tons and tons of protein. And guess what? But I mean, you will grow those parts that are getting damaged there, but the other parts will be underdeveloped. But I'm just saying you can do this one exercise and develop those muscles, but the other ones will be underdeveloped because you're not hitting them. But these ones will be developed, and protein is outpaced protein breakdown. You're going to build muscle, get it? And so every time you come back the following week to do this again vigorously, right, to get this damage to come back, you just add sets. You just add more sets to doing this because this is body weight. So either you're adding sets or weight sets, vice versa. That's all. You could add some weight, right? Here's the thing though. If you add weight, then you do the exact same sets. You can stay doing this exact same sets and reps if you're adding weight. So you would want to add increments of 10 pounds. So every week you come back, you just keep adding 10 pounds and you grow with the weight at the same time. So you damage those muscle fibers according to that weight and that set and rep scheme. See what I mean? And just eat shitloads of protein. You're going to see muscle growth. Come back every week after you've repaired and remodeled. Your muscles are unaccustomed again. They're ready to break down because the motor units, they kind of relieve after a week when you don't lift. 90 डिग्री ताकि ट्राइसेप पे काम हुआ। ये देखिए स्क्वीज। So we're more reliant on the muscle fiber now for its strength. So we're going to tackle the deeper, weaker muscle ones and get them to come up bigger and stronger every time. Yeah. चलो ये स्ट्रेच स्क्वीज, इसको एक बार में 8 से 10 करना है, 3 से 4 सेट लगाना है। पूरे ओवरऑल ट्राइसेप, चाहे लॉन्ग हेड हो, चाहे मीडियल हेड हो, चाहे शॉर्ट हेड हो, सब ट्राइसेप को ट्रेन करता है। उसके साथ सुपर सेट मतलब आपको वो एक्सरसाइज करने के बाद चलो अपने पीठ को कहीं लगा लीजिए और रॉड ले लीजिए। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं बारबल कर्ल। बारबल जो होता है ना बाइसेप के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है क्योंकि पूरे ओवरऑल बाइसेप को ट्रेन करता है। जैसे वो हमारे ओवरऑल ट्राइसेप को ट्रेन कर रहा था वैसे ही हमारे ओवरऑल बाइसेप ट्रेन करेगा। लेकिन ट्रिक ये है कि अपने पीठ को कहीं पे से सटा दीजिए ताकि जर्क ना हो, ताकि लंठाई न कर पाए, ताकि आप गलती कर पाए। चेस्ट अप किए, अब चल बे, पूरा स्क्वीज, आराम से नीचे, आराम से नीचे। ये देखिए आप Pura skij, samdariche. So you got to go up and then come down slow, he says. ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे मत करिएगा। कुछ लोग Come up fast and then slow. मारते हैं, कुछ लोग झुलाते हैं, ये नहीं करना है। पीठ को कहीं सटा दोगे ना तो कुछ लफड़ा ही नहीं होगा। ऐसे ये देखिए पूरा स्ट्रेच, आप चल स्क्वीज कर, फुला 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 फुला, नीचे ले ऐसे, मतलब टाइमिंग लेके आपको Upara niche le. टेम्पो सही रखना है बाबा। आराम से नीचे आइए, पूरा ऊपर जाइए। एक बार में 10 से 12 बार स्लो कंट्रोल स्क्वीज। 3 सेट इसको लगाएं। Slow control is squeege, yes. लेकिन 3 सेट तब होगा, आप 1 सेट पहले बार डिप्स को मारेंगे, 1 सेट ये मारेंगे, तब मिला के सुपर सेट में 1 सेट होगा। ऐसे ही हम लोग को 3 सेट करना है। 1 सेट बार डिप्स, 1 सेट ये। Super set, yes. 1 सेट बार डिप्स, 1 सेट ये। पूरा बाइसेप ट्राइसेप फटने लगेगा बे। दूसरी एक्सरसाइज ये ऐसी एक्सरसाइज है लोग नहीं करते हैं। लोग डायमंड पुशअप करते हैं, लोग और भी पुशअप करते हैं, लेकिन ये पुशअप नहीं करते हैं। जब आप अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर रखते हैं ना तो आपकी चेस्ट ट्रेंड होती है। लेकिन जब अपने हाथों को आप शोल्डर से अंदर रखेंगे, इतना अंदर, चलो पूरा बॉडी सीधी रखो, चेस्ट अप करो, अब नीचे जाओ, तो आपका ओवरऑल ट्राइसेप ट्रेंड होगा। डायमंड पुशअप लोग अच्छे से कर नहीं पाते। डायमंड पुशअप बहुत जर्किंग है सिस्टम वाला। See, he's hired these guys because he makes money on his YouTube channel, so he hires people to do the exercise for him, and now he can give lessons and talk and show them at the same time visually. He can explain and show you what's going on here. Very professional, gotta say. This guy is very smart, dude. He has over 3 million subs in like less than, I don't know, 2-3 years doing this channel. Yeah, he's just as rich as Greg Doucette, if not richer than Greg Doucette. Yeah, it's crazy. He does products as well on his channel too. He's sponsored in a bunch of stuff.
है, लेकिन अगर आपको सही में तगड़ा ट्राइसेप बनाना ना तो आप क्लोज ग्रिप पुशअप करिए, डाउन पुशअप वाला। So when you're crying about your YouTube channel why you can't make money, you can. You just have to find the majority of what people want out there, the niche that they want. They really want to just do exercises, really. The hardcore stuff is for the other people in the gym, lift heavy weight, powerlifting and all that. But the majority of the population is more interested in this kind of exercise, looking, you know, account more aesthetic. This is, you could say this is based more on aesthetic, a kind of aesthetic look, yeah. होता है क्लोज ग्रिप में आपने देखा कि पूरा ट्राइसेप ट्रेंड होगा और सही तरीके से आप लोड डाल पाएंगे और उसमें फॉर्म भी गड़बड़ नहीं होता है। सबसे अच्छा मुद्दा तो ये है, पूरा नीचे जाओ आप, पूरा एक ट्राइसेप को ये एक्टिव देखिए, आप खुद देखिए, आप सामने से देख लीजिए, आपके सामने आपको हो रहा है, आपके ये सामने हो रहा है, आप देखिए ना 10 से 12 बार स्लो कंट्रोल पूरा ऊपर जाके तानना होता है ताकि पूरे ट्राइसेप पे तगड़े तरीके से एकदम भूल के पंप मिले, बवाल मचे। एक बार में 10 से 12 बार इसको करना है, इसके साथ चेस्ट को रख। He found a guy that looks pretty good already, so you know. He doesn't look like this because he's doing exercises. I'm 100% sure. He looks the way he does here natural because of whatever he's eating, whatever he's doing. It's just natural. This is just a natural look. और ये डंबल ले लीजिए, आपके पास ईंट हो तो I mean, look at him. Take a good look at him. This is just his natural body. Look. That's just the way he looks. You know what I mean? Yeah. से कर सकते हैं, जो भी चीज हो पकड़ने का जुगाड़ मिल जाए, बाल्टी से भी कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं भाई, बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, आप अपना बहाना मत बनाइए। यहाँ पे चेस्ट अप रखिए, चलो दोनों हाथ से ये हैमर कर्ल, हमने क्लोज ग्रिप पुशअप किया, ट्राइसेप को पूरा फाड़ दिया। अब उसके साथ साथ we really got to focus more on the stretching. That whole like push-up stuff wasn't like, you know, isn't really doing it. But I mean, yeah, you can combine all these things and eventually something will give in the muscle for sure if you do enough of it, right? लॉन्ग हिट जो होता है बाइसेप का लॉन्ग हिट, जिससे आपका बाइसेप चौड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, ये करना है। हैमर कर्ल, स्क्वीज, पूरा स्ट्रेच करना है। अब इसमें फोकस ये रखना है कि कहीं से भी बॉडी Squeeze and focus. हिलनी नहीं चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। आपकी बॉडी पूरी टाइट है, आपका हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तानो फुलाओ, यही तो साइंस है साला, मेन साइंस है, इसके अलावा कोई साइंस फाइंस नहीं है। लेकिन That's right. Upara nichire. It's very good. Good job, man. The hammer curls. दुनिया भर का पलरा भर साइंस लेके उसमें डालने लगते हैं, जिससे मामला गड़बड़ा जाता है। एक बार में 10 से 12 बार, 10 से 12 बार पुशअप मारने के बाद इसको मारना, दोनों मिला करोगे तब एक सेट होगा। इसको कुल मिला के 3 सेट करना है। 3 सेट मतलब 3 सेट पुशअप के 3 सेट इसके, तब होगा 3 सेट, क्योंकि सुपर सेट हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरे हाथ को। अब ये Hardcore superset. That's what he says. Superset. Hardcore. You want to do hardcore supersetting. Yeah. Okay. ये जो एक्सरसाइज है ना, आजकल इसको लोग झंडू बाम बना के रख दिए हैं भाई। ये इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है, आपके पूरे ट्राइसेप को चौड़ा करके ना, हथौड़ा जैसा ट्राइसेप को, हथौड़ा जैसा ट्राइसेप, इसको बोलते हैं बेंच डिप्स। एकदम बेसिक वाला हम लोग करने जा रहे हैं। किसी बेंच पर आप बैठिए और अपने पिछवाड़े सटा के हाथों को रख लीजिए, यही ट्रिक होता है। चेस्ट अप करिए और पैरों को आगे करिए, ये देखिए, ताकि ना ये सट के ही जाए। अब इस पे आप चाहें तो आप प्लेट भी रख सकते हैं पैर पे, लेकिन स्टार्टिंग में बिना प्लेट रखे ही आप ट्राई करिए कि आपका फॉर्म सही हो। चल नीचे जब ये यहाँ पे गया, Let me say this clearly and directly. प्लेट रखे ही आप ट्राई करिए कि आपका फॉर्म सही हो। चल नीचे जब ये यहाँ पे गया, आप और पैर आगे करो, ये देखिए पूरा ऊपर नीचे। I don't recommend this exercise, man. It's very uncomfortable. It's dangerous and uncomfortable. Don't do it. ताकि ये पूरा ट्राइसेप 90 डिग्री नीचे जाओ, ये देखिए, ये 90 डिग्री। It's unnecessary to do this exercise. He already did so many things that the muscle was unfamiliar to doing. The ground, all the other ones, the dips, this, that. This one is unnecessary. It's dangerous. It's bad. Don't do it. ये यहाँ तक जाएंगे, ये अप होगा, पूरा चेस्ट को रखो पूरा नीचे, ताकि देखो ये इससे ना बहुत अच्छा पुश। I'm not saying you can't incorporate. You can, but I'm not saying it's a good exercise. It's not a good exercise. जब जहाँ अच्छा सा पुश मिलेगा, पुश मूवमेंट अच्छे से होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्राइसेप ट्रेंड होना चालू हो गया, ट्राइसेप को काम होना चाहिए। Reason being, a lot of the pressure is on your shoulders. That's why. हो गया है। दुनिया की सबसे बेस्ट देसी बवाल टाइप एक्सरसाइज है बेंच डिप्स। इसको एक बार में 12 से 15 बार ऐसे अगर करोगे ना, तुरंत तुम्हें फील होगा कि ट्राइसेप कैसा तगड़े If you hurt your rotary cuff, you're done, man. तरीके से ट्रेंड हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले बाइसेप में, ये बाइसेप ट्राइसेप दोनों ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि आप करने के बाद 21 सेट। Look, I recommend you get stronger first on specific exercises before you leap into doing things like this that are dangerous. So that way you don't get injured doing them. So get stronger first. Stronger muscles.
फील करेंगे अरे यार कितना तगड़ा हमारा हाथ पंप हो गया है। बेंच डिस्क मारने के तुरंत Yes. बाद हम लोग कर रहे हैं बाइसेप से डंबल कर्ल, दोनों हाथ से करेंगे ताकि कहीं से जर्किंग ना हो पाए। चेस्ट अप करो, पूरी कोहनी फिक्स करके चलो ऊपर आओ। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ फोर आर्म से काम हो रहा है। ये ऊपर जा रहा है, ये आ रहा है, कोहनी वहीं फिक्स है। जैसे बेंच डिस्क मारे हो उसके तुरंत बाद इसे करना है। लेट मत करना, 2-4 सेकंड लेट हो जाए उसके बाद लेट मत करना कि 2 मिनट बैठे उसके बाद करो, नहीं। सुपर सेट मतलब सुपर सेट, एक से खाली हो दूसरे में लग गए, ये एक्सरसाइज करनी है। Superset, that's right. तुरंत उसके बाद स्लो कंट्रोल स्क्वीज, ऊपर जाओ आराम से और नीचे आराम से। ऊपर जब जा रहे हैं, जब यहाँ पे हमारा सेट खत्म हो रहा है, सांस बाहर, लो सांस बाहर, लो सांस बाहर। ब्रीदिंग का भी ध्यान रखो हर एक्सरसाइज में। जहाँ पे हम लोग जब स्क्वीज करते हैं तो सांस को छोड़ना होता है, स्ट्रेच कर रहे हैं तो सांस को लेना होता है। 10 से 12 बार एक सेट में, और इसको मिला के करना है किसके साथ? बेंच डिप्सों के साथ। बाइसेप ट्राइसेप का तो ट्रेनिंग खत्म हो गया। 3 एक्सरसाइज बाइसेप किए, 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप किए, सुपर सेट में किए, एक दूसरे के साथ किए, जिससे बाइसेप ट्राइसेप फूल गया। लेकिन है यह तो है ये मसाला। Tricep, bicep, yeah, you want to superset. That's what he keeps advocating. You want to superset him. Okay. अभी तो है, इसको बोलते हैं फोरआर्म। इसके लिए एक कई सी राजा एक्सरसाइज बताऊंगा, कल लेना बवाल मच जाएगा। हाथों को जब भी आप देखते हैं Exercise. This really just is, you could call it exercise. It is just really exercising, really. That's all they're really doing. It's pure exercise. What is exercise? Nothing, just doing things, moving things around. That doesn't necessarily mean you're going to get some muscle damage, you're going to build some contractile myofibular growth or anything like that. Doesn't mean anything, man. It's just pure exercise. There's not a lot of focus there on damaging muscle fibers, but I'm not saying you couldn't get some. There's definitely something going to happen in the beginning, but he'll adapt to these exercises quickly, and then there's no more myofibular growth to be made. There'll be sarcoplasmic if he eats like what that guy does, Fruitopian guy, fruit and build fruit muscles. पकड़ते तो ऐसे पकड़ते होंगे, नहीं अब हम लोग सीधा पकड़ेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे। चलो ऐसे कैसे पकड़ रहे हैं? ऐसे, ताकि अंगूठा अंदर हो जाए। चेस्ट अप करो, यहाँ तक लाओ। I mean, listen, that's the reason why your body starts recruiting motor units. The recruiting of the motor units, it protects the muscles from getting damaged, because that adds to force production. So it's kind of like it's giving you this false force production in the form of motor units. It's not based on myofibular growth force production, your natural force production. The question is, how do you increase natural force production? When you build myofibulars, that increases natural force production, but chemical force production is through these motor units. Yeah. So they also are used to protect muscle from getting damaged. Get it? They protect them from being damaged, this motor unit stuff. That's why when you come back the following week, you're kind of like your muscles are untrained when it comes to the motor unit. So we don't want the motor unit. If you keep training every day, motor units protect muscles from being damaged. And anyways, they can't get damaged with a repeated bout. So, but anyway, the point is, when you come back the following week, the motor units, they kind of subside. So kind of like they're not really protecting the muscles from getting damaged. That's what makes your workout so much harder. You have to get weaker to get stronger. I'll explain this again in science, man. You have to get weaker to get stronger. नीचे इससे पूरा जो है आपका फोरआर्म, देख रहे हो इस लौंडे का फोरआर्म पूरा फूल रहा है। तो ऐसे करेंगे तो पूरा फोरआर्म से ही काम होगा, ना ही बाइसेप पे काम होगा, ना ट्राइसेप पे काम होगा। पूरा ऊपर नहीं जाना है, यहाँ 90 डिग्री, बस 90 डिग्री। अब पूरा टाइट पकड़ो, एकदम टाइट। 90 degree. It's just, this exercise is useless, but okay, whatever. तो इसे लगे ना उसी में प्लास्टर हो गया आपका हाथ। इसे एक बार में 15 से 20 बार, जितना कम वेट में जितना ज्यादा रेस मारोगे। It's not going to stretch it's not really going to put enough stretch on your bicep doing this reverse curl. You understand me? Yeah, it's not going to do it. But इतना whatever. अच्छा आपका फोरआर्म जो है ट्रेंड होगा इस एक्सरसाइज से। इसको भी लास्ट में जब आपका एक्सरसाइज पूरा खत्म हो जाए ना, 3 से 4 सेट मार लेना, पूरा फोरआर्म फट के बाहर आ जाए। ये देखिए अच्छा खासा पंप हो गया इनका मसल, बाइसेप ट्राइसेप दोनों। और I love this. He shows them posing here, but this doesn't make any sense. You're breaking down muscles. Why would you pose? You're actually getting smaller. You're shrinking. So you want to pose and show people how shrunk you are? Well, the phony bodybuilders, they move for the pump. So they pose after the workout because they're pump training. Now, if you're myofibular training, your posing is not really, you can pose. I mean, you can pose if you want, but you're breaking down proteins. You're not building muscle.
नेचुरल बॉडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक देसी Okay, yeah. डाइट लेते हैं और अपना बॉडी बिल्डिंग करते हैं। Bodybuilding Karte. See? Bodybuilding Karte. I love this. नेचुरली, ठीक है। अगर आप भी नेचुरली बॉडी बनाना चाहते हो तो ये जितनी भी एक्सरसाइज बताई बाइसेप ट्राइसेप के लिए, आप 20 से 21 दिन करके देखो, आपको खुद ही पता लगेगा कि आपका बाइसेप ट्राइसेप दोनों साथ में कैसे तगड़े तरीके से ग्रो होता है, बॉल कैसे मचता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एकदम बहुत Like, subscribe. Yes, they will definitely grow if protein exceeds protein breakdown doing these exercises. Yes, they will grow somewhat. Yeah. वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, कमेंट करके जाइए। हर हर महादेव। Hoo-wah. And like, subscribe. Support the channel. See you in the next one, man. That's what he's saying. I'll see you in the next video, friends. Hope that helped. Interesting video.